मेरा नाम है डॉक्टर एरा दत्ता और आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ एंड फ्लू में क्या कनेक्शन है. Chances are in this flu season you may have already had the flu, or if you do get the flu, did you know that your mental health actually has a very strong role to play in the outcome of the flu? मतलब आपके स्ट्रेस लेवल्स आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं. ये वीडियो पूरी देखिएगा फ्रॉम अ साइकाइट्रिस्ट पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ मेंटल हेल्थ एंड योर इम्यूनिटी गो हैंड इन हैंड. Guys, मेरा नाम है डॉक्टर एरा दत्ता और मैं हूँ एक मेंटल हेल्थ निंजा. आई एम अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हु प्रैक्टिसेस ऑनलाइन प्राइमरली. ये फ्लू सीजन चल रहा है इंडिया में. मतलब क्या है, हर साल फ्लू सीजन 2 बार इंडिया में जरूर आता है. एक बार होता है जनवरी टू मार्च एंड द सेकंड टाइम इज आफ्टर द मॉनसून. नाउ टिपिकली द मोस्ट कॉमन फ्लू इज इन्फ्लुएंजा वायरस. फ्लू एक वायरस की वजह से होता है. इन्फ्लुएंजा के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं. द करंट, if I may say, flavor of this season, pardon the pun, is actually a H3N2 virus where it is an outbreak in our country currently. In fact, there has recently been reported a death from the influenza virus H3N2. But mind you, ये जो डेथ्स हुई हैं ये बहुत ही ज़्यादा कोमॉर्बिड वाले लोगों में हुई है. एक जन को कैंसर था और एक जन को बहुत ज़्यादा बाकी बायोलॉजिकल कंडीशंस थे. सो डोंट बी स्केर्ड. ऐसा नहीं है कि हर फ्लू होने वाले को ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्नलिस्ट to engage in responsible reporting. Meaning, we cannot just say कि हर वायरस की वजह से लोग मर रहे हैं. हर साल काफ़ी लोग मरते हैं, हर साल लोग बीमारी से मरते हैं, हर साल लोग फ्लू सीजन में मरते हैं. So we do not have to create a hype about it, neither as doctors nor as a media. I think this fear psychosis, this paranoia about illnesses causing death. Of course, illnesses cause death, but ऑटोमेटिकली हर वायरल फीवर की वजह से डेथ होना, जस्ट लाइक द कोविड-19 दैट वी सॉ, ऐसा नहीं है. सो काम डाउन ऑन द पैरानोया. एंड व्हाई? हियर मी व्हाई. The reason why people who have high stress levels end up having higher chances of having an infection or flu are because their cortisol levels are constantly high. वो हर समय चिंता करते रहते हैं. जब cortisol level high होता है तो बॉडी हर समय सोचती है कि हमको लड़ाई करनी है किसी इन्फेक्शन से. कोई आउटसाइडर कोई आ रहा है हमारी बॉडी में हमें तंग करने, बट नहीं है. So when really the infection comes in, all the body's defense are already at such heightened speed, and it doesn't fight the real infection when it comes in the picture. So remember, while stress is good, you have to be hygienic, you have to be careful, but that doesn't mean कि हर समय होना चाहिए. तो common flu के common symptoms क्या है? चांसेस आर कि इस फ्लू सीजन में आपको कॉफ, कोल्ड, थोड़ा सा फीवर, सर्दी खांसी जुकाम हुआ होगा. किसी भी फ्लू सीजन में हो सकता है. ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेन ऑफ वायरस है इससे ड्राई कॉफ हो रहा है, लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ लोगों को बहुत दिन नोज रनी या फिर बंद रह रहा है. कॉज इज डिस्ट्रेस, कॉज इज स्प्लिटिंग हेडेक फॉर सम पीपल. ऑफ कोर्स इट इज डिस्ट्रेसिंग. फीवर स्पाइक होता है कुछ लोग को 1-2 दिन, देन इट कम्स डाउन विद मेडिकेशन. The thing is, the government has issued a warning that do not overuse antibiotics. मतलब लोग क्या कर रहे हैं, doctors specifically, they are prescribing antibiotics left, right and center, and that is not the right way to treat a viral infection. Viral infection नहीं ठीक होता है when it comes to antibiotics, because it is not a bacterial infection unless you have a secondary bacterial infection where obviously the antibiotics will help. Now, mental symptoms are there when you have flu. Yes. You can have psychological, emotional, and mental symptoms when there is flu. What are some of these? Some of the most common ones you must have heard in the COVID period. Brain fog. यार मेरा दिमाग नहीं चल रहा है. I can't think straight. मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है. My brain doesn't compute as fast. I can't pay attention, concentration. So brain fog is supremely common. Restlessness is very common. Feeling anxious or health anxiety, heightened feeling of yaar better क्यों नहीं हो रहा हूँ. In fact, I had a gentleman patient who kept on insisting that why isn't my cough going? I've seen 3 doctors already and they're all asking me to wait and watch, with that constant fear that something really bad will happen. Having said that, the other common mental health symptoms, they can be exacerbation of depression, they can be unmasking of depression. Some people can have sleep issues. Very common are sleep issues actually, because you may end up sleeping a lot of the day, all of the day, and then you can't sleep very well at night. If you've been struggling with your sleep, you may want to check out the sleep program that I have, which is the most comprehensive, easiest, DIY friendly, Sasta Sundar aur Tikau sleep management program that is called Sleep Well with Ease, and the link is going to be in the description below. Having said that, some of the people just feel a generalized sense of fatigue and not like themselves. तो क्या किया जाए? पहली बात फिजिकल बॉडी के बारे में बात करते हैं, मेंटल बॉडी के बारे में बात करेंगे, मेंटल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, एंड फाइनली प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इफ यू हैव द फ्लू, प्लीज नो यू हैव टू रेस्ट इट आउट. यू हैव टू
ride the storm. मतलब ये होगा, खराब होगा, better होगा, ठीक हो जाएगा. It takes a while. Sometimes you can take even 3 to 6 weeks to feel fully better physically. Now, having said that, get ample hydration up. Try to get enough sleep. Try to take your medication. Try to take your vitamins. Your doctor may prescribe you some vitamins. Vitamins absorption में help करते हैं. Make sure you eat all your meals. Don't skip any of your meals. अगर भूख नहीं भी लग रही है तब भी थोड़ा सा healthy nutritious food खाइए. इसके अलावा रेस्ट करिए, जितना रेस्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. अगर आपको स्टीम इनहेलेशन एडवाइस किया जाता है, सब लोगों को किया जाता है, स्टीम इनहेलेशन लीजिए. अगर आपको मेडिकेशन दी गई है टाइम पे लीजिए. नाउ कम्स द मेंटल पार्ट. फॉर द मेंटल पार्ट कुछ एडवाइस आपको जेनरिक लगेगी, दादी के नुस्खे लगेंगे, नानी की बातें लगेंगी, बट दे आर ट्रू, दे हैव अ लॉट ऑफ मेरिट. So one of the things that actually works is the sunlight, meaning getting exposure to the sun is a very good antivirus, antibacterial. It kills so much infection. Make sure you get some sun every day. Make sure you open your windows up. Make sure you get enough hawa in your room, that there's ventilation in your room. Other than that, sleep is very important. Notice sleep will struggle during this phase, and like I said, there's a sleep program, or you can do basic sleep hygiene to sleep better. इसके अलावा कुछ सॉल्विंग सम पजल्स इज अ गुड आइडिया. मतलब आप सुडोकू खेल सकते हैं, आप फोन पे थोड़ा गेम खेल सकते हैं. डोंट कीप ऑन प्लेइंग मेरे नाम पे. बट इट्स बेटर देन जस्ट बिंज वॉचिंग और माइंडलेस स्क्रोलिंग और जस्ट लुकिंग एट सोशल मीडिया, बिकॉज ये सारी एक्टिविटी में ब्रेन यूज किया जा रहा है. सो ब्रेन पावर कहीं तो यूज हो रही है, एंड एज अ रिजल्ट यू मे ओवरकम द ब्रेन फॉग फास्टर. यू मे फाइंड इट फ्रस्ट्रेटिंग, बट कीप डूइंग इट. साथ ही में वंस यू फील फिजिकल बॉडी इज हील्ड, make sure you start exercising, because it increases the blood supply to your brain, and the more you exercise, the better you are likely to feel, and the better these symptoms are likely to, subside in some time. Having said that, speak to a mental health professional if things are not feeling right. Make sure that you see someone. ऐसा मत करते रहिएगा कि सब कुछ सेल्फ ट्रीट करना है. सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है. एंड फाइनली, अगर आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी चीज़ की अनमास्किंग हुई है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिएगा. इट इज़ इम्पेरेटिव यू गेट सम हेल्प. How to prevent the flu? Of course, masks, washing hands, hygiene, isolation. They're golden. But you can also get the influenza vaccine, which prevents the chances of you getting influenza. Again, prevents. ऐसा नहीं है वैक्सीन लेके तो कभी नहीं हो सकता है, and you need to take one every year before the flu season starts. Overall, I would like to say if you're having any kind of flu, you will get better. All the best. Give this video a thumbs up, and don't forget to like, share, and subscribe. My name is Dr. Dutta, and I'm the Mental Health Ninja. I'm signing off. Take care. Stay well.